Guru Chanakya once said, learn from your mistakes and learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. With these lines, I, your host, Mansi Chauhan, welcome you all in another episode of Safarnama, organized by Gurukul Dream Foundation. And today, I have with me as a guest for Safarnama, Mr. Pranav Patel, CEO of Chanakya Aanvishiki Pvt ltd, director at Chanakya Institute of Public Leadership, and a PhD research scholar at Ellen Wellington Institute of Management Development and Research. So, first of all, apologies if I do not pronounce the name right. Please let me know what is the correct Yes, name no of the worries. organization. Thank you, Mansi, first of all, for inviting me for this session, and thank you to all three founders, the inspiring founders of yours, including Akash, Avinash, Himanshu. You guys are doing a great job. I was talking to Akash in the morning, and it was really very glad to know the kind of work you guys are doing. So, congratulations and great work you all are doing. So, thank you for inviting me over. Yes, regarding the name of our company, it is Chanakya Aanvishiki, right? So let me help you pronounce it. Let's say, let's break the word Aanvishiki into two words. See, the first word is Anu. You know what Anu means? Anu means atom, Right? right? It means Anu, Right. Kana, smallest Correct. thing, atom, Anu. We have Anu bomb, or in Mumbai we have something called Anu Shakti Nagar, which is where BARC, Baba Atomic Research Center is. So all the atoms which we talk is Anu, right? And Ikshiki means someone who is curious to know something, जिसको जानने की बहुत इच्छा है, right? So Ikshiki. So and let's mix Anu and Ikshiki, mix Aanvikshiki. So Anvish, Anvikshiki. Yay! exactly, yeah, you understand. In fact, Aanvikshiki is a very old word in our, I would say, literatures and history. You would be surprised to know that Draupadi's one of the name is also Aanvikshiki, and it's there in Mahabharata. Aanvikshiki has been spoken about then. There is a lot of literature on Aanvikshiki available, and there is also a lot of research work going on Aanvikshiki as a subject, because it's all about thinking, how to think strategically. So that's a word which has been there. I mean, so hopefully in the next couple of years, because of our company and the programs that we do, people will start knowing the word again, and will start using it again. I would say that's more important. That will be awesome. Thank you so much, sir. Thank you so much for helping me out there. Uh, सबसे पहले the very first question I have, because आपने अभी एक sentence कहा कि you are going to help people, knowing कि not what to think but how to think. This is Yes. this is the thing that also we received as questions. Like when Mhm. this term comes, like throughout our life we have been taught that we can think about this, we can think about that. Maybe True. sure, for sure, maybe this also, but how to think, that critical thinking part is something that is not Yes. taught in our schools. It is True. something that we're not taught, or we're not, it is something not really talked about. It's something people assume that we should know. Yeah. So Sure. sir, as I. as somebody as somebody who's a student right now, and the whole the audience of this episode will be of students, as it's going to be broadcasted. So the number one Right. question that comes is how to think actually. Yes, exactly. Unfortunate that we as a country lost this beautiful art, and we always say Anvikshiki is art of thinking, and that's when this question always comes up, because we say Anvikshiki is about how to think, not what to think. Now, understand the education system which we all come from, and probably you guys are, I would say, fortunate. At times, I feel that I have born at least 10, 15 years early. I should have born in maybe in the millennials, because the kind of life which you guys are going to get is going to be amazing. Understand? The Britishers were the one who formed this education system. We somewhere copy pasted it as a system. What they did is they wanted labor, they wanted workforce. So they all gave us certain subjects to study which were helpful for them in their administration. ठीक है. So पहले ऐसा होता था, you pass out 10th standard, you have options in terms of your junior college or school, whatever you have according to your state. Go take art, commerce or science, right? बहुत अच्छा स्टूडेंट था in our generation. It was he will go to science. A mediocre would go to commerce, and जिसको कुछ नहीं मिल रहा है या लड़की है शादी करना है तो उसको आर्ट्स में डाल देते. That's used to be the mindset of people at that point of time. And we were always said यही सोचना है, यही पढ़ना है. Our education system was designed in a manner where we had a
करिकुलम कि ये सब्जेक्ट है आपके, ये इतने चैप्टर्स है, ये क्वेश्चंस है, and you'll be taught this many things. So that is what was given to us. So Dr. Patel at times very rightly says our education system is not education system, it has become an examination system. आपको बोला गया है कि ये आपको पढ़ना है, इतना याद रखना है और इसकी आप पे एग्जाम होगी, कितना याद रख सकते हो उसके ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? बट दैट डजंट मीन कि उसने समझा है नहीं समझा है. एंड मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग आई एम श्योर यू एंड मी, हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले रट्टा मारते हैं, कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, कैसे याद करना है, और वहां जाके उल्टी कर देते हैं. एग्जाम रूम से जैसे बाहर आए, इट्स ऑल गॉन, इट्स वैनिश्ड, राइट? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट काइंड ऑफ सिस्टम? बट देन इट वाज सेड कि हम लोगों को लेबर चाहिए, हम लोगों को इतने अकाउंट्स वाले लोग चाहिए तो इनको अकाउंट सिखा दो, हम लोगों को इतने लोग लैब्स में काम करने चाहिए, फैक्ट्री में काम करने के चाहिए, इनको ये सिखा दो. नाउ दैट इज हाउ द इंडियन पॉपुलेशन वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स बिकॉज़ दे वांटेड टू यूज अस एज लेबर फोर्स, राइट? We see that even in World War I and II, Indian army soldiers fought for the Britishers. ठीक है, तो they always wanted to use us as labor force. अभी इसके अंदर what to think हमें बताया गया कि ये पढ़ो, साइंस का एग्जाम है, कॉमर्स का एग्जाम है, आर्ट्स का एग्जाम है, जो भी पेपर है वो पढ़ लो, कर लो. इसके आगे हमको सोचने को अलाउड ही नहीं था. What to think doesn't give us that freedom. It puts us into that box. How to think हमें ये कहता है कि आपको क्या सीखना है. चलो आप से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डॉक्टर, यू डूइंग योर मेडिकल साइंस, ठीक है, क्या आप साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो? वाओ, पहले के जमाने में वो कैसे, वो साइंस वाला है, मेडिसिन वाला है, बायोलॉजी पढ़ के जा रहा है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेगा और क्या मतलब है? यू नो, दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन यूज्ड टू कम अप. But then that is where the beauty is. If you studying medical science and economics together, probably you can run a hospital or probably run medical administration. You can be a part of some kind of pharmaceutical company to understand how the market works, how the healthcare market works in that particular fashion. ठीक है, ये fusion है, ठीक है. So now, in fact, thanks to our government and the new education policy, the NEP which we have this freedom of picking the subjects which we want to. ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको साथ में पेंटिंग सीखना है, अरे बोलेंगे ये क्या बात है, इंजीनियरिंग है, एवरीथिंग इज 1 + 1 = 2, ठीक है, बट इन आर्ट देयर इज नथिंग 1 + 1 = 2. यू वांट टू डू पेंटिंग, ठीक है, but understand a good artist, a good painter can become a good architect as well because he knows, he has a sense of design. Okay, so can engineering people also study arts? Why not? No? So that is what how to think tells us. It tells us कि ये सोचो, think in that manner. But what to think about it is free. It's left up to you, according to your situation, according to what you are going through, what your liking is, what your surrounding is. You think that ways. So there are models which have been taught in our philosophy, which are said the thinking models. कि आपको अगर किसी चीज के बारे में सोचना है तो आपको 1 2 3 4 5 थिंग्स करनी है और इससे आपको कंक्लूजन आ जाएगा. तो मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम आजकल इसको बोलती है डिसीजन मेकिंग साइंस. हमें डिसीजन कैसे लेना है वो सिखाया जाता है, राइट? बट यू कैन ऑलवेज रीच टू अ डिसीजन इफ यू पुट द राइट थिंकिंग इनटू इट. डिसीजन लेना क्यों सिखाना पड़ता है? इफ यू हैव लॉजिक्स, इफ यू हैव रीजंस, इफ यू हैव समथिंग व्हिच यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड यू कैन प्रूव इट, यू कैन डेफिनेटली टेक अ डिसीजन, राइट? तो डिसीजन मेकिंग साइंस होने की जरूरत नहीं है इफ यू नो व्हाट हाउ टू थिंक. That is what how to think is all about. We do this in our Aanvishiki program because Aanvishiki is one of the models of thinking which Chanakya teaches us. Okay, so you want me to take you through a bit of Aanvishiki if you have time? Yes, sir, we have. We would love to. Yeah, sure. So let's do that. Then see, Aanvishiki is the first sutra of Kautilya Arthashastra. Okay, Aanvishiki bolta hai, and the first sutra of Arthashastra says Aanvishiki Traivata Dandaniti Cheti Vidyaha चतस्त्र एव विद्या इति कौटिल्यः. ये फर्स्ट सूत्र है. क्या है? 4 विद्या है जो आपको लीडर को समझनी चाहिए. अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति. ठीक है, क्या है अन्वीक्षिकी? फर्स्ट वी अंडरस्टूड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक वे ऑफ थिंकिंग, कैसे सोचना है. दूसरी चीज त्रयी, मतलब क्या? इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको त्रयी मींस बेसिकली वेदास, द 3 वेदास व्हिच वी टॉक ऑफ. सो उस समय में 3 वेदास थे. ठीक है, 3 वेदास कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. अथर्ववेद गॉट एडेड to the list of Vedas later on. It's happened from somewhere around 300 AD that हमारे philosophy में we added Atharva Veda as a part of it. So first there were only 3 Vedas which we talk of, right? So Samved, Yajurved और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 3 Vedas. Next, Aanvikshiki Trayi वार्ता. वार्ता मतलब क्या? इकोनॉमिक्स. ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए. ठीक है, the leader has to study economics. Third thing, दंड नीति. दंड नीति मतलब क्या? Art of punishment or art of law. How do legalities work? How do political science work? वो सीखना जरूरी है लीडर के लिए.
ठीक है, अब ये चीज पढ़ के होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आन्वीक्षिकी अगर कुछ समझता है, सीखता है, तो दे नो हाउ टू थिंक, राइट? So that is a model of thinking which Aanvishiki talks of. We will get into those details. Next, थ्री वेदास सीखने से आपको ये पता चलेगा कि एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है. हम बहुत इजीली वर्ड यूज करते हैं धर्मा. धर्मा हम लोग यूज कर देते हैं मोर रिलीजन. आपका कौन सा धर्म है? तो मेरा जैन है, आई एम हिंदू, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम जू, कुछ भी बोलते हैं. इन आवर फिलोसॉफी, dharma did not mean religion. Dharma means what is ethically right to be done in a particular situation. ठीक है, तो आप जब तीन वेदास पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि आपको वो सिचुएशन में क्या करना है, वो एथिकली राइट है या रॉन्ग है. ठीक है, इसके अंदर आपका स्वधर्म क्या है, उसके हिसाब से आपका डेफिनेशन आता है, विच वी कैन गेट इनटू डिटेल्स. नंबर 2, आप क्यों पढ़ेंगे कि आपको वार्ता आना चाहिए. कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी एक्टिविटीज करें, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पता होना जरूरी है. ठीक है, और तीसरी चीज आपको क्या है, तो दंड नीति. आपको लॉ, लीगैलिटी, परमिशंस देनी है, क्या है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस, ये वो, दैट यू हैव टू वर्क अपॉन. ठीक है, सो दिस आर 4 थिंग्स व्हिच वी वर्क अपॉन. नाउ नंबर 1, आन्वीक्षिकी क्या सिखाता है. आन्वीक्षिकी जब चाणक्य बोलते हैं तो वो 3 इंडियन फिलोसॉफीज में से बन के आता है. कौन सी 3 इंडियन फिलोसॉफी है? सांख्य, योग और लोकायत. ठीक है, अगर देखा जाए तो इंडियन फिलोसॉफी में, जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है, उसके अंदर 9 फिलोसॉफीज है. ये 9 फिलोसॉफीज जिसे हम इंडियन फिलोसॉफीज कहते हैं, वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, राइट? ये 6 प्लस 3 जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारोवाक या तो फिर लोकायत, जो भी दो नाम बोलते हैं. दिस आर 9 इंडियन फिलोसॉफीज व्हिच वी हैव, राइट? आउट ऑफ दिस चाणक्य सेज द लीडर को अगर आन्वीक्षिकी समझना है तो उसको 3 फिलोसॉफीज जानना जरूरी है. सांख्य फिलोसॉफी, योग फिलोसॉफी और लोकायत या चारवाक जो बोलते हैं, वो ये 3 फिलोसॉफीज का अध्ययन करना जरूरी है. ठीक है, सांख्य से क्या होता है? सांख्य बेसिकली अगर बहुत डिटेल में समझा जाए तो कपिल मुनि ने दी हुई फिलोसॉफी है, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल बिकॉज़ फिलोसॉफी का क्लास नहीं है ये, हमें तो थोड़ा आन्वीक्षिकी के ऊपर से समझना है. तो सांख्य को हम संख्या के मामले में ले लेंगे. अभी एवरीथिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू क्वांटिफाई. आपको सोचने के समय हर एक चीज को संख्या में डालना है. ठीक है, तो सांख्य वहां आ गया. योग क्या कहता है? पतंजलि योग सूत्र से अष्टांग योग है, बाबा रामदेव ब्लेसिंग्स टुडे योग एवरीवन नोज अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, योग हमें ये सिखाता है कि आपका स्थित प्रज्ञता कैसे होना चाहिए. स्थित प्रज्ञता मींस व्हाट? योर बैलेंस ऑफ माइंड, हाउ यू आर इक्वानिमस, हाउ यू आर बैलेंस्ड इन एनी सिचुएशन. आप वॉर में हो, आप युद्ध में खड़े हो, तो भी आपका बैलेंस होना चाहिए दिमाग. ठीक है, आप खुशी में हो, बहुत खुश हो, तो भी आपका दिमाग बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट योगा टीचेस अस. एंड थर्ड थिंग लोकायत. लोकायत मतलब चारवाक जो सिखाते हैं वो वर्ल्डली मटेरियल बेनिफिट्स कैसे होते हैं और मटेरियलिज्म क्या होता है, वो इसको समझाया जाता है. तो ये 3 चीजें जो आपको समझ में आती है किसी भी सिचुएशन में, हाउ टू थिंक जो आपने मुझे पूछा, तो हाउ टू थिंक में 3 चीजें डाल दीजिए. सांख्य पहले नंबर में डाल दीजिए. आपको क्या करना है? लेट्स से एन एग्जांपल कि आपको ग्वालियर से दिल्ली जाना है. ठीक है, ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो फर्स्ट आपको संख्या में सोचेंगे मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या संख्या रहेगी? संख्या में 2-3 संख्या आती है. एक तो टाइम, कितना टाइम लगेगा, तो यू हैव नंबर ऑफ आवर्स. डिस्टेंस आ जाएगा, इतना डिस्टेंस जाना है. कॉस्ट आ जाएगा कि इतने पैसे लगने हैं. ठीक है, तो यू विल हैव ऑल दिस टू बी पुट इन टर्म्स ऑफ सांख्य. नंबर संख्या में डाल दीजिए. ठीक है, योग, यू शुड हैव बैलेंस्ड माइंड. कोई बहुत प्रेशर है, जल्दी जाना पड़ रहा है, कुछ भी है, शांत मन से सोचिए कि विच इज मेरा एकदम मन शांत. थर्ड थिंग जिससे लोकायत के मटीरियलिस्टिकली क्या बेनिफिशियल है. मटीरियलिस्टिकली बेनिफिशियल में आप ये सोचेंगे कि मेरे को जाना तो बहुत जल्दी है, तो आई विल टेक अ फ्लाइट. ठीक है, मेरे पास टाइम है, ठीक है, इतना जल्दी भी नहीं है और मुझे इतना पैसा खर्चा करने का मतलब भी नहीं. यू विल से चलो आई विल गो बाय ट्रेन और आई विल गो बाय आई विल ड्राइव डाउन और समथिंग. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू. ठीक है, तो यू विल टेक अ कॉल अकाउंट. सो आपको वहां पे आपका मटेरियल क्या इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो 3 चीजें संख्या, योग और लोकायत, ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन. तो दिस इज एन आर्ट ऑफ थिंकिंग. वी गेट इनटू मोर डिटेल्स. ये 3 दिन का पूरा सेशन होता है आन्वीक्षिकी के ऊपर व्हेन वी टीच. लेकिन कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी डिसीजन लेना है, एनी टाइम एनीथिंग यू वांट टू डू, 3 चीज का स्टेप रख लीजिए. संख्या, नंबर्स में डाल दीजिए अपने विचारों को. ठीक है, दूसरा योग, शांत चित्त, मन शांत हो जाइए, बैलेंस हो जाइए. ठीक है, इक्वानिमस हो जाइए. एंड थर्ड थिंग, आपको मटीरियलिस्टिकली वो प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, वो देख लीजिए, तो आपको उसमें से उसका कॉल आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज वे ऑफ थिंकिंग. फिर अभी कोई भी सिचुएशन आप ले सकते हैं इसके अंदर. जी, व्हाट डू यू थिंक? ड्यूली नोटेड सर. आगे बढ़ते हुए यूजुअली मैं अपने गेस्ट से ये पूछती हूँ कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु होते हैं, अब कोई मेंटोर होता है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर
जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है, आपको थोड़ा देखा है, थोड़ा समझा है, समझ पाए हैं कि आप गुरु चाणक्य से बहुत प्रभावित हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी एंड फ्रॉम आवर ऑडियंस आल्सो कि ये कैसे हुआ? आम तौर पे जब हम अपने मेंटर्स और गुरुओं को देखते हैं तो वो दे आर पीपल who live among us. They are people who maybe are our seniors or somebody who we take guidance from. But गुरु चाणक्य कैसे? जी, बिल्कुल। चाणक्य हैपेंड टू मी, मैं तो बोलूँगा कि कभी-कभी यू फाइंड अ टीचर, कभी-कभी द टीचर कम्स टू यू एंड आई एम द वन हू इज़ ब्लेस्ड इन दैट मैनर कि टीचर हैज़ कम टू मी, मेरे को चाणक्य हैपेंड टू मी, आई वुड से। समझना चीज़ ये है कि चाणक्य एक विचारधारा है। चाणक्य ने एक विचार रखा है, एक वे ऑफ लिविंग रखा है, एक वे ऑफ थिंकिंग रखा है, ठीक है? जो उन्होंने अपने विचार लिख के रखे हैं अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है? अर्थशास्त्र एक उनका ट्रिटाइस है, रिटन स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर उन्होंने समझाया है कि क्या राज्य कैसे चलाना है, ठीक है? तो वो उन्होंने अपने विचार, तो एक विचारधारा है चाणक्य। चाणक्य एक व्यक्ति बिल्कुल थे, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा जो रखी वो इस तरह रखी। अब जब भी जिंदगी में कुछ करते हैं, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये कहा यहाँ पे, तो जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो इसके अंदर ना ये शास्त्र है। कुछ चीजों की जिंदगी में कृपा होनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है? सबसे पहले हम सब हमेशा बोलते हैं कि सुबह उठे भगवान को याद करते हैं, तो हम बोलते हैं ईश कृपा होनी चाहिए, राइट? तो ईश भगवान को, मतलब ईश कृपा आप पे होती है, भगवान की कृपा, तो वी रिमेंबर के थैंक यू गॉड, राइट? सेकंड थिंग, कभी कभी हमारे पे जो होती है वो होती है पितृओं की कृपा। तो हमारे पेरेंट्स जो है उनकी कृपा होती है हमारी लाइफ, राइट? तो उनकी we are thankful that they have brought us in this life, and they have done whatever they could to their best ability for us in life, right? So पितृओं की कृपा होती है वहां पे। तीसरी चीज होती है शास्त्र की कृपा। शास्त्र की कृपा ये होती है कि बुक्स, आप किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है? नॉट ऑल बुक्स विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, ठीक है? कभी कभी कुछ बुक आपको ऐसी लगेगी वो आपने पकड़ ली, आप खत्म ही कर देंगे उसको, यू विल नॉट स्टॉप, ठीक है? एंड यू फील दैट यू आर टॉकिंग, आप वो किताब से बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं कि उस शास्त्र ने अपने आप को आपके लिए खोला है। द शास्त्र स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। बेस्ट वे ऑफ एंड द मोस्ट फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज, वो बापू दिखता है, मुन्ना भाई को बापू क्यों दिखता है? बिकॉज मुन्ना भाई इज कंटिन्यूसली स्टडिंग अबाउट बापू, बापू ने ये किया, बापू ने वो किया, बापू ऐसा है, बापू ऐसा है, बापू ये, बापू दिमाग में केमिकल लोचा, दैट बापू कम्स इनटू माय माइंड, बापू हर जगह दिखता है। बट बिकॉज ही शास्त्र की कृपा, वो रिटर्न वर्क जो राइटिंग उन्होंने पढ़ा, वो उनके दिमाग में इतना इफेक्ट हो गया। तो शास्त्र की एक कृपा होती है जब आप नॉलेज आपके पास आता है। गुरु कृपा होनी बहुत जरूरी होती है। गुरु एट टाइम्स जो आप कह रहे हैं वो सही है कि किताब को गुरु बनाया, चाणक्य को गुरु बनाया, और चाणक्य का शास्त्र मेरे पास आया, पर वो आया किसके थ्रू? तो डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले जो मेरे गुरु है, जिन्होंने टीचर है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक है? मैंने 6000 सूत्र उनके थ्रू, उनके पास पढ़े हैं, ठीक है? गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे कल्चर में है, हमारी रीति रिवाज में है कि गुरु शिष्य को पढ़ाता है, ठीक है? और जो विद्या होती है वो गुरु से शिष्य को ट्रांसफर होती है, और शिष्य फिर अपने शिष्य को या जिस तरह उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज आल्सो हैपेंस टू गुरु शिष्य पर। तो गुरु की भी कृपा इसके अंदर होनी चाहिए। माफ कीजिएगा सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका नेटवर्क कनेक्शन जा रहा था तो सुन नहीं पाई मैं आपको कि आप क्या कह रहे थे। अगर आप रिपीट करें तो। लास्ट चीज आपने क्या सुना? गुरु शिष्य का कल्चर। गुरु शिष्य परंपरा। सो बेसिकली मेरे जो टीचर है डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले, जिनसे मैंने सीखा, ठीक है, वो गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। हमारे जो जब मैंने 6000 सूत्र सीखे थे मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके, 6 महीना रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रह के जब मैंने सीखे 6000 सूत्र डॉक्टर पिल्ले के पास, तो वो एक गुरु शिष्य परंपरा में सीखा गया। ये तो गुरु की भी कृपा होनी जरूरी होती है, और जो आपके टीचर है वो भी आप पे जब होता है। और ये बात सही है क्योंकि आजकल बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स, वो टीचर कभी कभी उनको शिष्य भी पसंद आना चाहिए, चलो मैं बातें करता हूँ और चलो मैं और ज्ञान शेयर करता हूँ या कुछ और सिखा देता हूँ ये स्टूडेंट को। तो गुरु की भी कृपा कभी कभी होनी बहुत जरूरी, इनफैक्ट वो बहुत जरूरी ही होती है। एंड फाइनली एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्व कृपा। आपकी खुद की भी कृपा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे भी आगे आई वांट टू डू दिस। तो स्व, वरना तो हम वही सुबह उठेंगे आराम से 10 बजे, चलता है, हो रहा है, जैसे है वैसे है, कैन हैपन। बट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, स्व कृपा आपकी खुद की भी होनी चाहिए। So all these things comes together. You have to focus upon different aspects in life in that manner. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। प्रणव जी, मेरा आपसे अगर अगला सवाल ये होगा कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो पता चला कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं, आप अपनी एक एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र पे, और उसी के साथ आप सीईओ तो हैं ही एक कंपनी के। तो मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
में जब आप काम नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हैं? सी काम नहीं कर रहे होते तब क्या होता है, ये सवाल मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो दिमाग का काम करते हैं, और दिमाग का काम करने के लिए हमें समय का कोई पर्याय नहीं रहता। ठीक है, हम रात को जाग रहे हैं कहीं पे तो दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ दो चार चीजें उसके अंदर चल रही है दिमाग में, तो दिन में कहीं बैठे हैं तो भी दिमाग चल रहा है, कहीं कहीं किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे बहुत कम टाइम आता है जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, but definitely there is a lot of time I spend by myself. I watch lot of OTT आजकल, because I feel it is the way to be in touch with the new generation. क्या content develop हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, तो I watch a lot of OTT that ways. पढ़ते रहता हूँ, research करते रहता हूँ, I keep reading about lot of things, so I have a library at home. Now that the library is not growing further because बुक्स डिजिटल आना शुरू हो गए, वरना पहले तो घर में जगह नहीं थी बुक्स रखने के लिए, सो आई कीप रीडिंग एज एन हॉबी व्हिच आई like to do. And apart from that, I spend good some time meditating also, so I practice a bit of vipassana meditation, so spend some regular time, and that is, I would actually say, जो आपने पूछा ना कि अकेले में क्या हो, तो that is more of me time, जहाँ पे I spend time with myself. तो दिन में आधा एक घंटा अगर निकाल देते कम से कम, that you can just sit with yourself without doing nothing, so that is another thing which helps. So yeah, these are few things जो करते रहते हैं. जी। तो सर, सबसे पहले तो आमतौर पे ये जवाब नहीं सुनती मैं लोगों से। जब भी मैं यूजुअली हमारे गेस्ट से बात कर रहे होते हैं तो उनके पास एक एक्सटेंसिव प्लान होता है। वो आमतौर पे अपनी वर्क लाइफ, हालाँकि काफ़ी मुझे मेरे गेस्ट ने सिखाया है कि इट्स नेवर वर्क लाइफ बैलेंस, इट इज़ ऑलवेज़ मैनेजमेंट, इट्स नेवर द बैलेंस। तो उसी शब्द पे आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पे सर आई अज़्यूम जैसा कि आपने बताया कि आप किताबें काफ़ी पढ़ते हैं, यू आर एन अविड बुक रीडर, एंड अगेन आवर ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ मोस्टली स्टूडेंट्स हू वुड लव टू गेट सम बुक रिकमेंडेशंस फ्रॉम यू। सो Yes, sure. See, book recommendations में मैं चाहूँगा कि you when you're reading, don't restrict yourself to a particular genre. You know, usually college time में ये हो जाता है, हमारे सबके साथ ये हुआ है, because we pick up reading at times with fiction in college. So मैंने college में I started, I would say, first book I ever completed, ठीक है, was Godfather, you know, by Mario Puzo. So वहाँ से पढ़ाई करना शुरू हुआ, फिर मैंने Rich Dad Poor Dad, I read Robert Kiyosaki somewhere in that point. But unfortunate for us at that point of time, Indian content, Indian writers available नहीं थे. Okay. In today's time, if you walk into Crosswords or any of the bookstores, ठीक है, आप Indian writers और Indian content बहुत ज़्यादा दिखेंगे as compared to what was there say 15 years back. Okay. So I would suggest some reading which you guys should do is also know who the writer is and where the writer is coming from. So Indian content, Indian writers का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमारे Indian point of views, Indian way of thinking मिलेंगे. ठीक है, so make sure, I'm not saying don't read Western, I'm saying read the Western readers also. ठीक है, so few things like Think and Grow Rich, Napoleon Hill, or Dale Carnegie you should read. Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey you should read. But at the same time, I would say look at Indian writers also. So start reading a bit of Devdutt Patnaik if you like, or I don't even mind if you read Chetan Bhagat. You know, ठीक है, I mean he writes commercially and it's funny, but ठीक है, I mean एक Indian way है, Indian way of, I mean I don't mind. Like I read 5 Points Someone as one of his first book, which was there. 5 Point some one, yeah. So जिसके ऊपर थ्री इडियट्स बना था, तो वो मूवी उससे पहले बुक था, तो बुक वाज वेरी फेमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट इट इज कॉलेज लाइफ, मुंबई में आईआईटी की लाइफ है, क्या जीते हैं, सो यू कैन रिलेट टू इट. अब हम इंडिया में बैठ के अगर हम किताब पढ़ेंगे कि वो वहाँ यूएस में बैठे बैठे कुछ कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठ के कुछ लिख रहा है, वी कांट कनेक्ट टू इट. ठीक है, विदन वी एस्पायर कि अरे क्या लाइफ होगी ना वहाँ पे, ऐसा होगा. तो वहाँ जाओगे समझोगे कि अरे सब सेम ही है इधर उधर, इनफैक्ट इंडिया इज मच बेटर. सो so yeah, try reading Indian content is what I would suggest. Well, to be fair, sir, most of us have been exposed to Chetan Bhagat very early on. I mean, he was the first writer that we were, we got to know, oh yeah, we have an Indian famous writer, oh, that is Chetan Bhagat. फिर थोड़ा टाइम बाद पता चलता है कि oh, okay, we have some other writers, some better writers, not to compare, Yes. but yeah. Okay. Yes. So in fact, I'm reading one book, a collection which I would like to right away share with you. All right, and it's a collection which I am reading. It's a book which says World's Greatest 50 Letters.
and these are letters written by great leaders to others. So Mahatma Gandhi ने अगर Adolf Hitler को letter लिखा है तो वो इसके अंदर है. Mahatma Gandhi wrote a letter to Subhash Chandra Bose. That letter is there in this. So let's see what leaders used to think and how they used to write. So that's in fact there is another 50 world greatest leaders. So I keep reading them and understanding them, trying to understand कि leaders कैसे सोचते थे. So this such kind of things. I would say read biographies. Fiction, okay, we can read fiction. I'm a fan of Chetan Bhagat in my earlier college days as well. But I would say start reading which is of fiction. Try and slowly, if you have got into a habit of reading, start reading autobiographies. Start reading stories, biographies of other leaders, people who have done great in life. That will inspire you. That will give you some real life spirit to live on. So read those, I would say. ड्यूली नोटेड सर. इसी के साथ मैं अपने क्वेश्चंस को थोड़ा बैक ट्रैक करके इस फेज पे आना चाहूंगी कि सर सबसे पहले तो जब आपको मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, आपसे बात कर रही हूँ, तो एक परसेप्शन बनता है कि आप काफी पढ़ाकू बच्चे थे इन स्कूल इन कॉलेज. तो मेरा वही सवाल है कि व्हेन यू वर इन स्कूल, what kind of a student were you? Were you a backbencher? Were you the person who used to sit on the very first bench and learn everything? I was the most talkative student in class. So that is and other thing is no, I was a super mediocre student. My parents were only thing they used to tell me is we don't, and they knew me, and they're like, we don't want to do first rank, second rank, third rank lies in the game. We don't even want to first 10 ranks lie, but it's okay. But make sure you get decent marks and pass. No, so that was what was always told by my parents in life. Okay, padhai karo. My dad used to always say, if your syllabus is say 10 chapters, ठीक है, 10 chapters में से आपने 5 पढ़े ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 बराबर से पढ़ो. So that is what my parents have always forced me. They have never gone. Yes, I was not that a great student. In fact, studies का, reading का मेरे को habit लगा after my college life. So when I was in hostel when you have friends around, the best hobby of things is exchanging books. तो एक बुक किसी के पास उसने पढ़ लिया क्या, तो things. So when I started reading Godfather, it was a borrowed book of my friend. That's how I started reading. So वैसे हो जाता है. I mean, it's about, and at times it's about finding people around of the same mindset. ऐसे लोग हैं आसपास, तो कोई ना कोई आदत लग जाती है साथ में. So yes. Thank you for sharing that with us, Pranav ji. तो आगे बढ़ते हुए my next question is कि आमतौर पे जब हम अपनी calling की बात करते हैं और अपने passion की बात करते हैं, it's not something to a student जो बहुत easily हम लोग realize कर पाते हैं. There is always confusion, there are always doubts, and there is always parental and peer pressure. तो सर, जब मैं आपकी लाइफ से आपकी कुछ एनेक्डोट्स जानना चाहूंगी कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक कंपनी चला रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट इज जो हम एक जो हम एक टिपिकल प्रोफेशन कहते हैं, ये उसमें नहीं आता. अभी भाई इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग, बट स्टिल देयर इज दिस थिंकिंग. तो सर, हाउ डिड यू फाइंड योर कॉलिंग, एंड कमिंग फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, so I'm just reading the question. Coming from the college students, how can what advice would you give them to find their calling or find their passion, or how can they follow their passion with properly thinking about it? No, so see, it's very important that when we live life, we live a balanced life. और जब मैं balanced life कहता हूँ ना, तो I would say live in the present. Whatever you are doing ना, do that the best. जो कर रहे हो ना, जो अभी की मोमेंट है ना, enjoy to the most, do whatever you're doing to the best of your abilities, ठीक है, not putting too much expectation on yourself, number one, ठीक है. So if you look at my background, and if I have to tell you, as I said, I was not a great student in my school days. I did hotel management, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला. इंजीनियरिंग मेडिकल तो दूर की बात है, भूल ही जाओ. दैट पेरेंट्स नेवर इवन ट्राइड और थॉट इवन स्पोक टू मी अबाउट इट, ठीक है. So I did hotel management. Post hotel management, I did something. I went to New Zealand. I went into sales and marketing. So my specialization was marketing. Post that. So मैंने marketing किया. I came back to India. So a friend asked me, अब क्या करेगा? मैंने कहा पता नहीं. तो क्या करना है? Marketing करके क्या बेचेगा? मैं क्या बेचेगा? तो ऐसे पैसा बेचूंगा. पैसा बेचेगा? पैसा कैसे बेचेगा?
Yeah. So I went into this profession of financial services. So I became a certified financial planner then. So I started the days when there were mutual funds having NFOs on NFOs coming out day after others and things like that. This I'm talking about 2007, 8 in fact, 2008 if I have to put it exact. So since then, so I did my CFP. मेरे को मजा आ रहा था. I was learning, मैं कर रहा था. So I was doing my hospitality, hotel management किया मैंने. ठीक है. Now understand one thing: whatever you do in life, it is going to help you and it is going to shape you in some or the other manner. Okay. Today, because I did hotel management, so मेरा people skills are much better than others because I have been in that industry कि लोगों से बात करना है, मिलना है, interact करना है. ठीक है. My marketing sales skills definitely help me. I know I can understand the market at least better than people who don't have any exposure at all. Okay. I went into the financial world. I understand the financial markets in a particular manner, at least with some sense of it. ठीक है. I after my CFP someone said मैंने कहा आगे पढ़ना है और करना है, मुझे मजा आ रहा है इसके बीच में. तो my guru, my teacher then Neeraj bhai, with whom I work, it is NJ India Invest. It's a company based in Surat, a very famous mutual fund distribution company. In fact, they are a wealth management company now. They have their own mutual fund which was launched last month as well. So he said, go study further, go to CFA. I did CFA level 1. I came to Mumbai, I started studying, I did CFA level 1. I started preparing for CFA level 2. लेकिन फिर then I was like थोड़ा लालची हो गया, नौकरी अच्छी मिल रही थी, मुंबई आ गया था. I started working again. I got into banking. I was vice president with HSBC Bank and things like that. So it happened to me then. So but ठीक है, I enjoyed the part of it. थोड़ा study किया, पूरा CFA खत्म नहीं किया. I didn't put pressure on myself. कर लिया, जितना समझना था समझ लिया, कर लिया, move ahead. ठीक है. I was studying this and someone said Mumbai University में कोई अर्थशास्त्र सिखा रहा है. ठीक है. So अर्थशास्त्र सिखा रहा क्या है? I thought Indian economics कोई सिखा रहा है. So I said, अच्छा, Indian economics सीखना है, चलो, let me study this also. So now understand, I didn't follow a particular path or a particular plan or something. I just went on with what happened to me, but giving my fullest to it. And understand one thing, as someone rightly said, अगर सब प्लान बन के जिंदगी में चलते होते ना, तो आज साउथ अफ्रीका में एक फर्म होता था जिसका नाम होता था MK Gandhi and Sons, right? And then MK Gandhi and Sons would have been a solicitor company जो वहाँ पे लॉ लीगल केसेस लड़ते होते थे. इंडिया को कभी आजादी नहीं मिलता था. ठीक है. वो वहाँ पे महात्मा गांधी नहीं बनते थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी सॉलिसिटर बन के रह जाते थे. अनफॉर्चुनेटली समवन थ्रू हिम आउट ऑफ द ट्रेन. The history changed his path, right? So nothing works according to a plan. Yes, you should plan. I'm not saying you should not plan, but understand your plan has to be in a manner that it is just giving you direction. वरना you will say अरे नहीं हुआ, मैंने ऐसा सोचा था, फिर ऐसा हो गया, stress, pressure. It's okay. Take it life easy. Be in the moment. Take the right approach towards life, that you are doing your best in the current moment. Then you will be happy and you will keep continuing your journey. जैसे आते जाएगा होते जाएगा. So that's how life is. जी, अंडरस्टूड. तो अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है, ओके सर, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी प्रिसाइज क्लियर कि हम चाणक्य जी की लर्निंग्स को हमारी लाइफ में, इन स्टूडेंट लाइफ, आप अभी काफी कुछ बता चुके हैं पहले भी, पर हम स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से ढाल सकते हैं? जी, see, understand, student life में चाणक्य बहुत important है and can definitely be of lot of use, because जब कौटिल्य, चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने ये लिखा था for the prince who is going to become the king. ठीक है. जो प्रिंस है, जो युवराज है, जो राजा बनने वाला है, तो definitely he is a student to whom he had written this to. ठीक है. Now चाणक्य prescribes certain things which you have to do as a student. There is a lifestyle which you need to follow as a student, which is a little disciplined lifestyle, higher than people who are not students. और अगर आप lifetime student हो, तो you have to follow certain discipline throughout your life, which normal people will not follow, and you will at times feel yourself disconnected from that. But as a student, there is certain discipline which you need to follow. Okay. Few things. Take up a habit, a positive habit, that you will get up, say, for example, in the morning, meditate for some time, or probably you will go work out in the evening for some time. You will probably go for a run in the evening for some time, or probably you will read a certain number of pages in a day. Ek habit, okay? Pick it up for yourself according to what Chanakya says, because Chanakya says continuously. Pick up a habit where you are improving yourself again and again and again and again, as a student as well. Okay? Apart from your studies. Your activity which I am talking to, and in academic terms it is extracurricular activity. आप curriculum के बाहर का एक activity पकड़िए and give enough amount of time to that.
ठीक है. That will not only let you rejuvenate yourself, but also make you more effective and more adaptive. आपका ग्रास्पिंग पावर जब आप स्टडी करेंगे तभी वो मच बेटर होगा. ठीक है. बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन. एक बार भूल जाना भी जरूरी होता है. अंडरस्टैंड. स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन. एक बार भूल जाओ. जब खेलने जा रहे हो तो खेलो, तभी पढ़ाई का मत सोचो. ठीक है. जब भी यू गोइंग आउट फॉर डिनर, यू गोइंग आउट फॉर पार्टी, बी देयर, एंजॉय द पार्टी टू द फुलेस्ट. राइट. आई से वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड. बोथ करना जरूरी है लाइफ में. But whatever you do it to the fullest. Live life to the fullest. Give your best you can. Then don't regret. जो होना है वो होगा. ठीक है. So when you're studying, study to the fullest. But when you're not studying, don't think about studies. करते क्या है, हम पढ़ाई करने बैठे तभी हम कुछ सोचते हैं कि नया नेक्स्ट मूवी कौन सा आने वाला है, which is the next series getting launched, when is the next season coming. वो I mean might be the mind is going there. At the same time when you're watching the series, then you're tension में चल रहा है कि वो बाकी है, अभी करना, इतना पढ़ना बाकी है, एग्जाम आ रही है, I have to finish my assignment, वो डेजर्टेशन सबमिट करना था, मैम ने वो दिया हुआ है, ये कराना है, वो कराना है. Don't do that. Do whatever you are doing, do to the fullest, and keep yourself active in some or the other activity, is what I would say, according to Chanakya's understanding, which I feel out of Arthashastra. Because Chanakya ने जो दिनचर्या बनाया था राजा के लिए, understand your daily routine, and as a student it is very important that you follow a daily routine. एक दिनचर्या आपको बनाना जरूरी है. In that दिनचर्या you should follow certain activities at certain point of time, especially things like when you are getting up, when you are sleeping. ठीक है. When you are doing certain activities in a day, all that has to have a certain routine which has to be there. So दिनचर्या आपका कैसा है उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है. So what Chanakya says, as a student, focus upon this part of it. जी. ये आपने जो चीज बताई कि कभी कभी भूल भूल जाना भी जरूरी है, ये बहुत ही नई चीज थी. आमतौर पे मुझे या हम लोगों को ऐसे सुनने को नहीं मिलता कि भूल, यूजुअली ये प्रेशर होता है कि सब कुछ याद रखना है, अगर याद किया है तो याद चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए और सालों तक चलना चाहिए. बट दैट्स रिफ्रेशिंग. थैंक यू सर. इसी के साथ अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव हियर. ओके, तो सर हम क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश करने वाले हैं. आमतौर पे हम ये मान के हम सभी जानते हैं कि लाइफ में हम गलतियां करते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं. तो एज अ गेस्ट आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जो अब आप उनसे काफी कुछ सीख चुके होंगे. बट अगर आपको हमें कुछ एनेक्डोट शेयर करना चाहें तो सर क्या बताएंगे आप? Yeah, a lot of things. I mean, mistakes are the way to learn, and the graver mistakes you make, the greater learning you get at times. तो जितनी बड़ी गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे जिंदगी में. ऐसा भी होता है. I am saying making mistakes is not wrong. In fact, making mistakes is good. ठीक है. सो मैं जब HSBC में था तो वी ऑलवेज हैड दिस ना, कंप्लायंस है, बैंक है, यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन, ये वो. तो गलतियां होती थी, बहुत सारी गलतियां. ये कोई कहीं पे कुछ फॉर्म में कुछ लिखना रह गया, कहीं पे कस्टमर का साइन लेना रह गया, कुछ गलत कहीं पे लिख दिया, दिस एंड ऑल दिस कंप्लायंस इश्यूज एज अ बैंक व्हिच वी फेस. ठीक है. सो माय बॉस यूज्ड टू टेल मी, मतलब कंपैरिजन होता ना, कोई एक लड़की थी हु वाज द सर्विस मैनेजर, उसकी एक भी गलती नहीं, स्पिक एंड स्पैन, सब परफेक्ट हमेशा होता था. तो एंड आई वाज, बॉस पता नहीं क्या करता हूं लेकिन नहीं होता, मेरा ध्यान कहीं और होता है. he says it's okay. I was like, okay, what does he mean to say? So he says, गलतियां कौन करता है? जो काम करता है वो गलती करता है ना. जो काम नहीं करता है वो गलती कैसे करेगा? राइट. इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो गलती होने ही कैसे वाली है? ठीक है. So at least if you are making mistakes, that means you have tried something. Okay? You tried something new which you did not know and it went wrong. That's okay, but you tried something new. Okay? So it's very important that you make mistakes. That doesn't mean you keep on going mistakes. Definitely you have to learn from your mistakes. You have to improve upon that. Okay? Mistakes करके उसको accept करना कि हाँ मेरी गलती है is the first step towards learning. ठीक है. Once you accept that, then you know कि मेरा क्या गलत था. अपने आप you start. So you should know that here I went wrong. Self analysis करो. When you're sitting in that meditation, as I said, in a day, try and look at yourself. What am I doing? गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है, सीखो, improve करो. That's an opportunity. कहीं पे कोई क्राइसिस है तो it's an opportunity. If you're going something wrong, आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, that means you are growing, you are improving. There is an opportunity for you to do better. ठीक है. So make mistakes and keep learning from them. Noted down, and ये चीज तो कभी नहीं भूलेंगे. With that, sir, another question that we have been receiving in huge number is how can we join the workshop? Is it possible to join the workshop online that you organized
True. organization conducts? Yes, so we have a lot of formats in which we function now. We run short-term courses, which is a 3-day course, 1.5 hours into 3 days. There are different modules. There are 6 different modules. So one at least a month we try and run a module in that. So there is Art of Getting Rich coming up this month. So Art of Getting Rich is more about to do finance. आपका economics कैसे होना चाहिए. We take up a 3 days program in which we focus one day majorly upon macroeconomics. So more to do with country का economic कैसा होना चाहिए, administration कैसे होना चाहिए, how the country's finance should be managed. And second point which we look upon is micro, where individual finances, self, आपके घर का finance आपको कैसे manage करना है, savings क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए. But picking up sutras from Kautilya Arthashastra and Chanakya Niti, so that we can see that how those sutras, those principles जो है वो present day में भी relevant है. So that is what we do. So Art of Getting Rich is the first program coming up 23rd, 24th, 25th. So these are short formats, which are courses. We do long formats, which is more of coaching. We have a batch starting on 22nd. It's a very interesting date because it is 2-2-2-2-2. So 22 to 22, that's going to be the date. We are starting a 1-year program. It's a 1-year mentoring program जो हम करते हैं, जहाँ पे we meet once in a month. We interact, we talk, we take up a theory, we discuss things, and in which you can probably also put up your own challenges in life, personal मेरे ये issues है, so that discussion happens. And there is a small group. It is all group coaching program. तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, people share about their issues. In fact, people learn from each other. जो आपने कहा ना गलतियाँ, so Chanakya has rightly said, it's not, one life is not enough to make all mistakes. That's why we learn from others' mistakes, right? So दूसरों की गलतियां और यार दूसरों से learning भी होती है in a group coaching program. So that is what we are launching on 22nd. So there's a few things which keeps happening. You can visit our website chanakya-aanvishiki.com, and you can see all the programs are listed in the courses section out there. Apart from that, kuch bhi hai, my social media handle, everything is available, so you can send a message to me and we'll get you enrolled for the program. So feel free to do that. जी, with that sir, सबसे पहले thank you so much for providing the information, and उसी के साथ my last question for today would be, Sure. what is that one thing that happened today with you that made you smile? One thing that happened today, I got up in the morning. Yeah. Yeah, Good a good point. reason to. So make sure you're always smiling. Make sure in all situations you're always smiling. Make sure that this is one thing is a jewel which doesn't require any investment. It just requires a small attitudinal investment to it. ठीक है, आपका एक attitude सही रखो, आपका मन सही रखो. Keep yourself motivated in smaller things. Don't get moved by छोटी चीजें. अभी आ रहा था तो गाड़ी में पंचर हो गया. That doesn't mean that I will be harrowed. अरे अब क्या करूं? ठीक है, हो जाता है, लाइफ है, चलते रहता है. मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हैंडल इट, कीप योर कूल. सांख्य योग लोकायत, नंबर्स में देखो कितना टाइम बाकी था, कितने टाइम में पंचर चेंज होगा. मान शांत रखो. And then whether do I leave the car here, take a cab and go, or do I take my car and go to home? I have to take a decision. So Aanvishiki use kiya, and then it make it happen. So keep yourself balanced and keep smiling, as you said. So we are all living. The good part is we all got up in the morning, so at least we have not moved to the other world. We are still in this world. So and we remember who we are. So that's a reason to smile. Yeah. Exactly, sir. That is a very, if you look at it, that is a very basic reason. Yet we do not look at it the way we should be looking at it. Thank you, sir. With that, on behalf of Kurukul Dream Foundation, on behalf of our founders, I would like to extend gratitude to you, Pranav ji, that आप यहाँ आए, आपने पूरे पेशेंस के साथ मेरे सवाल सुने, उनके जवाब दिए, एंड हमको इतना कुछ सिखाया, अपने बारे में बताया, एंड हम इसी तरीके से चाहेंगे सर कि हम फ्यूचर में भी आपसे ऐसे ही सीखते रहें. With that, thank you so much, sir, for being with us. Thank you, Mansi. Thank you very much for inviting, and also great congratulations to you, Akash, Avinash, Himanshu, all of you doing great job. Congratulations once again, and happy to be around anytime. So feel free. Always will be glad to help. So thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Mansi. सो आज हमारे साथ थे प्रणव पटेल जी, जिन्होंने हमें इतनी सारी चीजें बताई, इतनी सारी चीजें सिखाई अबाउट लाइफ, अबाउट चाणक्य जी. आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना, हमें बताइए. और अगर आप चाहें
हैं कि देयर इज सर्टेन समवन जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, जिन्हें आप अपना मेंटोर मानते हैं और आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो लेट अस नो एंड वी विल मेक श्योर कि हम या तो उन्हें या उन्हीं की फील्ड से, उन्हीं के जैसे किसी महारथी को यहाँ लेके आए और उनसे आपके सवाल पूछें. विद दैट आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.